Hello everyone. The question that I am going to answer today is now what to read in mains over the next couple of months and how to go about prelims revision or what to read in prelims over the next couple of months till the time date is announced or till the time we have the new date, right? So let's jump right into it. So I'm gonna divide both mains and prelim strategy. Again, we have to prioritize. The importance is to prioritize what to read, what not to read. Mains में I am not making a division of first timers or pro or anything. इसमें सब division automatically आ जाएगा. The very first thing, priority number one is going to be optional. I cannot emphasize more on the importance of optional for securing a rank that will give you a desired service, right? If you want to be in top 100, top 150, you must be stellar in your optional performance. 300 plus marks दोस्तों लाने ही हैं. 300 plus marks लाने ही हैं. And we must do whatever it takes to achieve this target, right? So now within this optional, अब सारा division अपने आप समझ में आ जाएगा. What first timers should do, what pro should do, what specialist should do, right? So the very first target, the very first priority within the optional priority should be to touch areas that has been not done at all till now. Okay, areas not touched at all. There must be a lot of you, especially the first timers, especially people who took the coaching recently, etc. या जो अपने आप पढ़ रहे हैं, people preparing on their own, जिन्होंने कुछ areas अभी नहीं किए होंगे. There are certain areas that you tend to read, but then you don't like them, you get bored, and then you leave it, right? Now there's a golden chance, my friends. You have gotten extra time. Make use of the time. Make best use of the time. So the areas that you have not touched, make sure you do them. थोड़ा boring हो भी तो spread it out over few days. You don't have to sit and read the entire thing in one go. अगर boring है, spread it out, split it into smaller parts. आधा घंटा, एक घंटा दीजिए for that topic. If that topic requires 5 hours, don't do it in one sitting. If you are not able to do it in one sitting, spread it out over 3 days, 4 days. पता भी नहीं चलेगा, वो area ready हो जाएगा. And what you have to do in this? Read thoroughly, understand, and make notes of it. बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. यू हैव टू हैव नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक इन ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट इज देयर. कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, चांस ही नहीं लेना है. हमें एक ही बार में क्रैक करना है. हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जो भी हमारा डिजायर है वो बनना है. अंडरस्टैंड, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की मेहनत करने के बाद अगर आपको रैंक मिले टुवर्ड्स 500, 600, जिसमें सर्विसेज मिले, दानिक्स सर्विसेज मिले बहुत नीचे आके, सो उस एफर्ट का इतना वर्थ महसूस नहीं होगा, राइट? सो वी हैव टू एंश्योर whatever effort we are putting, we should get the desired result. So the first thing is touch the areas that you have not done so far, make notes of it. And once you are done with making notes, see questions on it and try to write some answers. ठीक है? This is this. अगर आपने ऐसा कोई एरिया नहीं है that we have not touched, there must definitely be certain areas which stays weak. Right? There must be definitely certain areas which stays weak. ऐसा कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने अभी इस लेवल पे आके ऑप्शनल इतनी अच्छी तरीके से कर लिया है that there is no weak area or there is no untouched area. So for people who still have weak areas, we focus on this. अगर ये आपके लिए नहीं है तो, right? What do we do in this? We make sure we revise everything properly. अगर आपके notes हैं, revise करिए. If you want to read a reference book, छोटा मोटा पढ़ लीजिए. Do not go into too many details. अगर वीक एरिया लगे कि मैं 4-5 बुक से पढ़ लेता हूं, नहीं, दिस इज नॉट द टाइम, राइट? मेक श्योर टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सोर्स, एडिशनल सोर्स ओवर एंड अबव योर नोट्स इफ यू वांट दैट. अदरवाइज नोट सफिशिएंट है, उसी को रिवाइज करिए. ऑलराइट? एंड व्हाट डू वी डू आफ्टर दैट? वी ट्राई टू राइट आंसर्स एज मच एज पॉसिबल इन दिस. ओके, इसके साथ हम जनरल भी आंसर राइटिंग करते रहेंगे. 2-3 आंसर ओवर एंड अबव दिस ये हम लिखते रहेंगे इन अदर एरियाज ऑफ ऑप्शनल, बट ये इस एरिया पे फोकस करने का है, राइट? Now, if there is no weak area or once you are done with your weak areas also, what do we do next? Now we pick up previous year papers, previous year questions. अगर आपने अभी तक नहीं किया है ये previous year questions, and what do we do with them? एक साल, कितने साल के? 10 साल के पेपर्स कोशिश करेंगे हम, जितना हो जाए. You go backwards from 20
19 एंड जितना पीछे तक जा सकते हैं अप टू 10 इयर्स। ऐसा नहीं है कि 20 30 50 साल के करने हैं, राइट? सम ऑफ यू कम एंड आस्क मी कि सर 91 से कर लें क्या, सर 2000 से कर लें क्या? नहीं, 10 इयर्स मोर देन इनफ, राइट? व्हाट डू वी वांट टू डू इन दिस? वी विल राइट मॉडल आंसर्स, राइट? वी विल प्रिपेयर मॉडल आंसर्स। एक रजिस्टर में मॉडल आंसर्स प्रिपेयर करिए, गो थ्रू दीज मॉडल आंसर्स अगेन एंड अगेन। कैसे पता चलेगा मॉडल आंसर्स है? शो द आंसर्स टू योर peers जो आपके साथ में ऑप्शन प्रिपेयर कर रहे हो, और इफ यू हैव अ मेंटोर इन दिस पर्टिकुलर एरिया, उनसे बात करिए या अपनी फैकल्टी से बात करिए अगर आप कर सकते हैं। फोटो खींचिए, लॉकडाउन है, फोटो खींचिए, भेजिए, रिव्यू लीजिए, राइट? प्रिपेयर मॉडल आंसर्स, ठीक है, एंड कीप रिवाइजिंग देम। अगर मॉडल आंसर प्रिपेयर है, try to see if you can better them over and above what you have done so far. अगर ये सब कर चुके हैं, नेक्स्ट व्हाट कम्स इज, अब कुछ नहीं बचा है। अगर सब कुछ कर लिया है, एक एक टॉपिक उठाइए, रिवाइज करना स्टार्ट करिए एंड प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, राइट? नाउ when I'm saying practice answer writing, you don't have to really practice new questions only. What you have to do is that whatever answers you have written in the past also you must try to improve them again and again. कैसे मैं वो additional half marks और फेच कर सकूं, कैसे मैं वो एडिशनल 1 मार्क और फेच कर सकूं, राइट? इन द एंड दिस इज द गेम दोस्तों, राइट? दिस इज द गेम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दैट वी सेट वेरी बिग टारगेट्स, डॉन्टिंग टारगेट्स की रैंक 1 लानी एक बार में। नहीं, लेट्स divide our targets into smaller chunks, very small chunks. क्या करना है मुझे? सिर्फ ये करना है that every answer that I'm writing, let me try to fetch 1 extra mark. Let me try to fetch half extra mark. If you apply this in every paper, if you apply this in all the GS paper and optional subject, GS paper itself has 80 questions approximately, and optional will have additional 30 questions approximately. So if you can fetch 1 extra mark or half extra mark on an average in every question, you have 50 to 100 extra marks already in your kitty. और वो rank 1 जो desire है वो इतनी दूर नहीं रह गई है, ठीक है? That's the point. So in the end, अगर सब कुछ कर लिया है, revise topics one by one, plus improve your answers. Improve your answers. This is what you have to do. This is exactly what you have to do. I'm sorry, let me change the pen. Right. So, revise the topics and improve your answers. That exactly is what you have to do in this. Now, once you are done with all this, और मान लेते हैं एग्जाम पोस्टपोन होता चला जा रहा है, एग्जाम इज गोइंग टूवर्ड्स August 23rd and 16th वाला वीकेंड, you might be done with it much earlier than that. उसके बाद क्या करें? और फॉर पीपल हु हैव बीन वेरी थॉरो विद देयर ऑप्शन ऑल द टाइम, ऑलरेडी हम 2-3 बार मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, आई एम स्कोरिंग 300-320 इन दिस, माय वीक स्पॉट इज जीएस, देन दोज पीपल शुड मूव टू द सेकंड प्रायोरिटी. व्हाट विल बी द सेकंड प्रायोरिटी? द सेकंड प्रायोरिटी पीपल इज गोइंग टू बी ethics. Why? Because ethics is one full paper again, and a lot of you do not really put efforts in ethics. और उसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ही ये सिचुएशन क्रिएट कर दी है that ethics will be done, can be done in 20 or 30 days, right? नहीं, जरूरी नहीं है, right? The more time you put effort in ethics, 4 पेपर हैं दोस्तों, so why not divide our time at least logically in favor of all the 4 papers? ऐसा क्यों है that 11 months of 15 महीने की तैयारी होती है? Why should we spend 14 months on 3 papers and only 1 month on ethics? We should spend a lot more time, a little more time at least than 1 month on ethics to score better. हम ज्यादा एफर्ट मारते नहीं हैं, हमारा एवरेज स्कोर 80-90 में आके रह जाता है. What we want, with a little more effort, we can easily go towards 110-115 in ethics also. So ethics में क्या करेंगे? Again, same idea. If you have notes of everything, well and good. If you do not have notes of everything, pick up the topics from the syllabus, make notes, read about it, make notes, make your own notes. ठीक है? The very first exercise which I recommend in ethics, if you have not done that so far, is take all the keywords in ethics. Go through the syllabus, find all the keywords, go through the previous year papers, find all the keywords like values, morals, integrity, transparency, ethics, etc., etc. Write a very crisp definition of each keywords. There may not be more than 40-50 keywords in total अगर आप देखेंगे. So write a very clear definition of each keyword and add an example on each keyword. Integrity, honesty और probity में क्या differences हैं,
your definition should be able to tell the difference, and the example should also be able to tell the difference between integrity, honesty and probity. Same goes with compassion, sympathy etc. ठीक है. So अगर empathy, sympathy, compassion में भी difference पता होना चाहिए, your definition should be able to give the difference out. ठीक है. So because mains exam is communication in absentia, आप वहां जाके समझाएंगे नहीं कि सर मेरा मतलब ये था समझाने का, नहीं, your answer should give out the right message. So first exercise that you can do if you have not done much about ethics, find out all the 40-50 keywords, write a proper definition of each keywords, differentiating between the similar keywords, and prepare one model example of each quality. Integrity का example बनाइए. Otherwise problem ये है यार, you go and think on the fly in the exam, और वहां पे after putting a lot of effort also the most juvenile example comes to mind, है ना, that I was in college. अगर हम ethics की बात करें या हम values की बात करें, I was in college, exam चल रहा था, my friend was sitting in the exam hall with me, he was cheating, now I was in a dilemma if I should rat my friend out or if I should just keep quiet to make my friendship worth, right? So हम सबसे पहले अपने friends को we throw our friends under the bus कि मुझ में बहुत सारे ethics हैं, friend में कुछ नहीं है. थक गए हैं सब लोग, बोर हो गए हैं सब लोग ये एग्जाम्पल देख देख के. सो इट्स बेटर दैट यू प्रिपेयर द आंसर बिफोर हैंड. इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू ऑल्सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर केस स्टडीज इन योर एग्जाम. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप, राइट डाउन अ डेफिनेशन, मेक ऑल द examples of individual keywords. Second step, whatever topics are there in the syllabus, make sure you are done with all the topics. अगर आपने नहीं किया है, then pick up whatever source you are referring to if you are comfortable with. If you do not have an idea of any source, find coaching notes. दो coaching के कोई notes उठा लीजिए, एक topic दोनों notes से पढ़िए, make your own notes. मेक क्रिस्प नोट्स, अपने नोट्स बनाइए, बट दो कोचिंग के उठाएंगे बिकॉज एथिक्स इज अ वेरी सब्जेक्टिव एरिया. एक कोचिंग से शायद इतनी क्लैरिटी ना आए, हमेशा याद रखिए, राइट? वट एवर पॉपुलर कोचिंग इज देयर इन द मार्केट, उसके आप नोट्स उठा सकते हैं. दैट इज द सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप कम्स केस स्टडीज. डू नॉट रियली वरी अबाउट केस स्टडीज राइट अवे. थोड़ी बात अगर आपने कर ली है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी करी है कोई बात नहीं. वंस यू आर वेरी क्लियर अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एथिक्स, केस स्टडीज डज नॉट टेक मच टाइम. वो हम प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कर लेंगे, इतनी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. आई कैन रिकमेंड दैट लेटर व्हेन आफ्टर प्रीलिम्स आई विल मेक सर्टेन वीडियोस एंड सजेस्ट व्हाट कैन बी डन इन एथिक्स. नाउ एथिक्स इज डन. अगर आपका ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, व्हाट शुड बी योर थर्ड प्रायोरिटी? ठीक है. नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रायोरिटी. Third priority, which might seem a little odd, but trust me, it is very important, is a topic called Indian society and social justice. Indian society and social justice. This, while it seems to be a very small topic, but it is becoming very important during the past, since the past few years, right? There are 7 to 8 questions asked in paper 1. There are 2 to 3 questions of social justice in GS2. This is also helpful in essay, very helpful in essay, especially अगर कोई women पे या society पे, community पे कोई essay आता है, it helps a lot, and it is also helpful in ethics. It becomes a very important area. अगर आपने नहीं किया है, do not take this lightly. Make sure you do this. I can recommend a very good source. There is a faculty called Smriti Shah, Miss Smriti Shah ऑफ इंडियन सोसाइटी. इनके आपको वीडियोस मिल जाएंगे ऑनलाइन. यू कैन जस्ट गो गूगल इट, मिल जाएंगे आपको आराम से, या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. मेक श्योर यू वॉच दीज वीडियोस. देयर विल बी 10 to 12 वीडियोस. मेक नोट्स. आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू डू दिस. नो मैटर हाउ मच सोसाइटी यू हैव रेड, आई विल स्टिल स्ट्रांगली रिकमेंड एक बार ये वीडियोस जरूर देखिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल बी अ गेम चेंजर दोस्तों. इट विल बी अ डेफिनेट गेम चेंजर फॉर यू गाइस. ठीक है. ये डेफिनेटली करना है, राइट? सो दिस बिकम्स द थर्ड प्रायोरिटी. नाउ आफ्टर दिस, अगर टाइम फिर भी बच जाता है, ये सब कर लिया है सर, कुछ और नहीं, कुछ बचा नहीं है मेरा, देन रिलैक्स करिए. Just keep writing answers as much as possible. फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए. रिवाइज वन टॉपिक एट अ टाइम एंड डू आंसर राइटिंग एज मच एज पॉसिबल. अदरवाइज इस पे फोकस करें. बट फर्स्ट प्रायोरिटी विल ऑलवेज बी ऑप्शनल सब्जेक्ट.
आप एथिक्स कर रहे हैं, आप इंडियन सोसाइटी भी कर रहे हैं, फाइंड 1 hour every day to write answers on optional subject no matter what. So this is how you go about your mains preparation. I have already discussed the time division in a day, how much time you should give to mains, how much time you should give to prelims. उसके लिए आप part 1 वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको कहीं वीडियो में दिख जाएगा अभी, otherwise it is also given in the description, right? You can also get in touch with me personally. Once again, my contact details will be visible on the screen right now, otherwise it is also there in the description. ठीक है, you can message me, you can SMS, WhatsApp, Telegram, anything, and if it is required, I will get in touch with you on call as well to help you out with the preparation strategy. So this is about mains. Now coming to prelims. Prelims में क्या करना है? I am sure a lot of you have done a lot about prelims already, so इतनी problem नहीं है, and that is why we are considering splitting our day into mains and prelims now, right? Otherwise, this is more important for people who are worried about their prelims. Again, या तो first timers, अगर first timers नहीं हो तो आप pro हैं या specialist हैं, ठीक है? ज़्यादा division का हमें इस बार load नहीं है. So what is going to happen? The very first thing everybody is asking me, sir, revision करने में बोर हो गए हैं. We have been revising the same book again and again, and now there are 3 more months or 2 more months. It is very likely that I'll get bored of revising things. So to cover that, I will suggest you a better method of revision, right? Although it might not be very interesting, but it will definitely be less boring. It is also more effective. Now in this, what you have to do is you have to pick up any paper that you have already taken. ठीक है, एग्जाम टेस्ट दे चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ यू वांट टू पिक अप अ न्यू टेस्ट, दैट इज आल्सो परफेक्टली ऑलराइट, राइट? व्हाट यू हैव टू डू इन दिस, फॉर एग्जांपल लेट्स से पॉलिटी रिवाइज करनी है, वी हैव टू रिवाइज पॉलिटी. सो इंस्टेड ऑफ जंपिंग डायरेक्टली ऑन टू लक्ष्मीकांत, pick up 3 or 4 sectional tests of polity which you might have already taken or which you intend to take in the future also. Pick those up. Now go through the question में you must be thinking, sir, answer mark है, कैसे effective होगा, नहीं होगा. It does not matter answer mark है या नहीं, don't worry about it. Just be with me for a minute. Now read the question, read the first question in the test paper, see what topic is the question based on. For example, अगर पहला question गवर्नर के ऊपर है, so in that case all you have to do is just read the question, that the question is asking something about governor. Now close your eyes, forget about the options for now, close your eyes, just try to recall everything you can on governor. For example, from its appointment to special powers, exceptions to his removal, right? Everything that you can recall on governor, just close your eyes and recall, right? Once you have done this, then you can read the options, then you can answer the question. Then go to the second question. Second question might be on maybe पंचायती राज or maybe लोकसभा स्पीकर. Do the same. पंचायती राज के बारे में whatever you can recall, close your eyes and recall. Lok Sabha speaker, whatever you can recall, close your eyes and recall. So the benefit of this exercise are twofold. One, it will prime your brain for randomized recalling process that is required in the exam. हर question different field का है. Immediately you have to prime your brain कि दोबारा से अब इस पे सोचना है क्या आंसर था, इस पे सोचना है क्या आंसर था, right? So एक sequential revision की बजाय एक randomized recalling exercise, it will help you prime your brain for the exam in a better manner. Second advantage is it will help you clearly demarcate the areas that while revising you might think आता है, because book is in front of you, notes is in front of you, आप पढ़ते चले जाते हैं कि ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है, बहुत आसान है, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं आता है, ठीक है? So whenever the notes are in front of you, it becomes very easy to revise things. But जब recall करने की बारी आती है without the notes in front of you, that's the real game. ठीक है? So in this manner, when you recall things without your notes being in front of you, it will clearly help you demarcate what are the areas in which you are facing difficulty recalling. एक sheet अपने साथ रखिए जब ये exercise कर रहे हैं, keep noting down those areas so that you have a very robust list of things that you have to revise in the future. ठीक है, जब भी आप रिवाइज करेंगे इस एरियाज पे ज्यादा फोकस करेंगे, सो दैट इन द एग्जाम व्हेन इट कम्स टू रिकॉलिंग इट डज नॉट बिकम अ प्रॉब्लम, राइट? डू दिस फॉर एवरी सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंशिएंट मेडिवल, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, एवरीथिंग. करंट अफेयर्स में भी कर सकते हैं. every test paper has demarcated current affairs कि ये अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स हैं इस टेस्ट पेपर में, there are September month current affairs in this particular test paper, so you will have a clear idea.
Now, why am I suggesting 3 and 4 or 3 or 4 sectional tests? Because in 3 to 400 questions, pretty much every area of the sectional will be covered. और जो end में रह जाता है, whatever remains, that you can do from the book. But you'll have a very clear demarcation. What are the areas that you have to focus on more? This will make your revision much more effective. And I am telling you, students come back to me saying that, sir, आपसे बात करने से पहले, ये apply करने से पहले, I was scoring 90 in the test paper, and now I'm scoring around 120, 130. ठीक है? Do this for few days and I can guarantee it will definitely improve your marks. अगर नहीं improve हो रहे हैं आपके for some reason, you can always go back to doing whatever you are doing in 3-4 days. It does not make much of a difference. ठीक है? So revision is this. ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, सिर्फ रिवाइज करना है. Now people who are still struggling with finishing the topics, right? तो वो लोग क्या करेंगे? Prioritize कर लीजिए test papers again. Subjects again. Economics should be the first priority, along with current affairs, then polity, then environment. Again, the reason of this prioritization is the experience of the previous year papers only. ऐसा नहीं है कि ये change नहीं हो सकता है. We have seen in the case of medieval history in the past year that अब तक question नहीं आते थे, nobody used to do it, और एकदम से there were 4 or 5 questions, right? So ऐसा नहीं है, change नहीं होगा, but the trend has been that up to 25 to 30 questions are asked in economics every year. Polity 10 to 12 questions are asked. Environment 12 to 15 questions are asked these days, right? So once you are thorough with these things, a significant portion is done for you. After this, you can come down to history, all the history. चाहे एंशिएंट है, चाहे मेडिवल है, चाहे मॉडर्न है, and art and culture also. Now remember, do not leave medieval anymore. If you have left it by even till now, this is a golden opportunity to cover this. All you have to do is read NCERT. I will make another video. The next video will be the sources. Immediately after this, there will be another video which will tell you the most important sources that you must cover for everything, right? So this is the next priority. Then next priority comes as geography. Along with this, top priority also remains current affairs. ये तो करना ही है दोस्तों, इसको नहीं छोड़ सकते, right? So ये फिर आप ये करिए. So this is how you have to proceed if you have not done any particular topic, any particular subject. This is the strategy that you have to implement. Now I will also make a separate video on the revision plan. Otherwise ये video बहुत लंबा हो जाएगा. I want to limit it to maximum 15 minutes, right? So इसके बाद आपको एक revision plan का video भी that prelims में exactly कितने दिन किसको revise करने के लिए दे सकते हैं based on the different dates that we were speculating in the previous video, right? So first priority, a new method of revision, a more effective method of revision, right? And then prioritize the subject list like given in front of you. So इस तरह से आप करिए अपना. Wait for the next video. The next video will follow soon. Today itself I will demarcate most important sources. I will also come out with a plan of revision. It is not a fixed plan, but more or less आप थोड़ा सा tweak करके अपने लिए उसको utilize कर सकते हैं, right? I hope this helps. Thank you again.